तो हम लोगों ने अभी देखा कि एक क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. What are the features that must be present in a vector to be chosen for cloning a gene? ठीक है? So there are three important features must be present in a cloning vector, that is presence of oocyte, presence of selectable marker, presence of recognition sequence. Right? Oocyte is chosen in such a way so that it allows high copy number, because we want to produce multiple copy of the gene of interest. Selectable marker help us to distinguish between transformants and non-transformants. We are choosing antibiotic resistant genes and taking them as a selectable marker. However, an alternate method for selection is coloring reaction. The third feature of a cloning vector is presence of recognition sequence. Its number must be one or a few. Otherwise, a large number of fragments will be produced, which is not favorable, as the process will be complicated, complex. Okay? Now, we are going to describe some of the cloning vectors, the agents which are commonly used as vectors are cloning vectors which we use are plasmid-based vectors, bacteriophages, plant viruses, animal viruses, BAC, YAC, etc. ठीक है? So these are the some commonly used cloning vectors. आप याद रखेंगे, आपको पूछा जाए यदि what are the commonly used cloning vectors or name a few, 2, more, 3, 5 cloning vectors, तो आप क्या कहेंगे? Plasmid-based vector, bacteriophage, plant viruses, animal viruses, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. समझे ना? So all of these different categories of vectors. अब BAC, YAC, animal virus, retrovirus and plasmid-based vectors आप जरूर याद रखिए. ठीक है? Plasmid-based vector, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome.
अब देखो, different factors are used. It depends upon the type of the cells, whether they are prokaryotes or eukaryotes, as well as the length of the genes. ठीक है ना? डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करके हम डिफरेंट अमाउंट में बेस पेयर्स को भेज सकते हैं। एंड आउट ऑफ दीज आप देख रहे हैं कि ईस्ट जो है ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, यूकैरियोट, ये यूकैरियोट है ना, ठीक है, एंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बडिंग, producing cells. So these cells are very simple among the eukaryotes. We are using simple enzymes to be as vectors, right? अब हम एक प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर की चर्चा करते हैं, ठीक है? प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, one of the plasmid based vector is pBR322। आपके बुक में pBR322 का डायग्राम बना है, ठीक है? pBR322 दिस इज ए प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये? दिस इज प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर। इसका नाम क्या है? pBR322। P रिप्रेजेंट्स प्लाज्मिड। P किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लाज्मिड को। B एंड R ये दो साइंटिस्ट थे, उसके नाम से लिया गया है। B फॉर बोलीवर, R for Rodriguez, and 322 is the code that have been kept by these scientists for this vector। ठीक है, समझ में आ गया? P plasmid, BR Bolivar and Rodriguez, and 322 is the code that distinguishes this vector from other vectors, right? अब ये जो वेक्टर होता है, it has two antibiotic resistant genes, ठीक है? इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स जो हैं वह दो हैं। One is ampicillin resistant gene and other is tetracycline resistant gene. I have already told you that these genes are used as a selectable markers, right? Besides, इसके अलावा इसमें ओरिसाइट भी होगा। This is orisite. There is a gene known as ROP. There is a gene known as ROP. ROP gene codes the protein required for replication of this plasmid. ROP is a gene. ये सारे जीन्स हैं, तो ROP is also a gene. ROP gene codes the proteins responsible for replication of plasmid, ठीक है? इसके अलावा ये जो जीन्स हैं इसमें डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है?
रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब देखो यहां हम साल 1 यूज कर सकते हैं, यहां हम बाम H1 यूज कर सकते हैं। इस जीन को हम थ्री रिकॉग्निशन सीक्वेंस है डिफरेंट एंजाइम्स का, दैट इज योर हिंट 3 CLAV1 and eco R1 and this ampicillin resistant gene जो है, this site can be cut by using two restriction enzymes with different recognition sequence, ठीक है, pBR322 and pBR322, right? One more enzyme can be used to cut the ROP gene, that is pBU2. इसका फिगर आपके बुक में बना हुआ, तो आप देखिए मैंने जितना एंजाइम्स आपको कहा था कि आपको लर्न करना है, याद करना है, all the restriction endonucleases are given here, ठीक है, PSC1, pBU1, EcoR1, CLAV1, HINT3, BAMH1, SAR1 and pBU2. So these are the different restriction endonucleases that can cut this vector at different sites. So we can insert the gene of interest, the foreign gene that we want to add with the help of these different enzymes at different sites. However, there are two antibiotic resistant genes. One is resistant to ampicillin and other is resistant to tetracycline, which can be used as a selectable marker, जिसको हम selectable marker के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको यहां यूज करना होगा, यहां जीन इंसर्ट करना चाहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में, तो आपको कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, साल1 यूज कर सकते हैं और BAMH1 यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन को डिस्टर्ब करें, तो हम यूज कर सकते हैं pBU1 and PST1. So with the help of different enzymes, we can add the gene of interest at a specific position, and then after inserting the foreign gene in this vector, the vector will be sent into the suitable host. जब इसमें फॉरेन जीन हमने इंसर्ट किया, अब उसके बाद हम कहाँ भेजेंगे इसको, सुटेबल होस्ट में भेजेंगे टू गेट इट्स मल्टीपल कॉपीज और टू गेट इट्स प्रोडक्ट्स. Our purpose is to get the desired product by means of culturing the genetically modified cells, genetically modified organisms.
So in due course we have to study what are the different uses that we obtain by using biotechnological processes. तो हम देखते हैं आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका आगे क्या यूज है।